on control system or in mathematics you will study t equals to 0, t equals to infinite is called steady state, and this is called initial value and final value thing, I think. So let's see the behavior of this thing. At t equals to infinite, your inductor is short, but your capacitor is open. So, but if you see the resistance also, if we will see the resistance, then resistance is frequency independent. So either F0, F infinite, T infinite, or T0. It is always R. Okay. So frequency is your independent of, resistance is independent of frequency. So let's check your answer. Who is open circuit at t equals to 0 plus? t equals to 0 पे ओपन कौन हो रहा है? ये तो शॉर्ट हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ए, दैट इज ओनली इंडक्टर. ठीक है, अगर यही आ जाता कि शॉर्ट कौन होगा तो आंसर होता कैपेसिटर. एंड हु इज दिस? ओके. एंड रेजिस्टेंस तो किसी केस में सी और डी तो 101% क्या होंगे? गलत होंगे आपके ऑप्शन. ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका भी समझ लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं हम अपना, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखते हैं क्या है. So our next question is, next question है हमारा, in a purely inductive circuit, question number 4, in a purely inductive circuit, in a purely inductive circuit, fill in the blanks. फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका, द करंट लीड्स अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री. आगे देखते हैं क्या ऑप्शन है. द करंट is in phase, the current is in phase with applied voltage. सी ऑप्शन जो है हमारा, देखते हैं क्या है. the current lacks applied voltage by 90 degree, and then last option is none of these. ठीक है, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन. फॉर ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट, current leads, current in phase, current lags. So if you have the phasor diagram of the inductor, if you see your theory, it is B angle 0 degree and it is I angle minus 90 degree. So let's check the option. For a purely inductive circuit, current lags voltage by 90 degree or voltage leads current by 90 degree. So check करते हैं. Current leads, no, it is wrong because current is lagging. It is leads, so it is wrong. Now current is in phase, no, it is lagging, wrong. So current lags, yes, this is correct. Current lags applied voltage by 90 degree. So your option C is correct. Now different अगर ऑप्शन बनाने पे कोई एग्जामिनर आ जाएगा तो क्या कर सकता है, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बात करेगा, तो अभी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? वोल्टेज, या शुड बी वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री. देन ऑप्शन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. तो देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या होता है. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है. सो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द एवरेज पावर in a
in a pure inductive circuit, in a pure inductive circuit is, the fill in the blanks. Okay, the first option is 0, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है VI, और अगला ऑप्शन अगर बात करें देन है VI cos phi, और लास्ट ऑप्शन जो है वो क्या है √3 VI and cos phi also. ठीक है, so in a purely inductive circuit the average power in a purely inductive circuit is, so if you see the formula of the solution में अगर देखते हैं, the instantaneous power is, if you remember, minus Vrms Irms sin 2 omega t, and if we take average of this, average equals to 1 by t 0 to t pt dt, then you will just put this value 1 by t minus Vrms Irms sin 2 omega t. Now if you remember, the average of sine, cosine, if it is having single frequency, double or multiple frequency with angle plus or with angle minus, then your average is 0. So the average of this term is 0. So if you see, the average is 0, and this average is 0 we have also seen by the instantaneous power waveform. क्या देखा था कि अगर हम इंडक्टर की बात करें तो फॉर द फर्स्ट क्वार्टर हाफ साइकिल ये सर्किट को एनर्जी क्या करता था, प्रोवाइड कराता था, फिर नेक्स्ट क्वार्टर हाफ साइकिल में क्या करता था, एनर्जी सर्किट से लेता था, फिर नेक्स्ट क्वार्टर हाफ साइकिल में क्या करता था, सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कराता था और फिर लेता था. दैट मींस जस्ट डिलीवरिंग कंज्यूमिंग फॉर ए कंप्लीट साइकिल it is 2 times supplying the energy and 2 times giving the taking the energy. That's why the average power is 0, and average power 0 means the inductor is in ideal condition is a purely storing element, but practically if you see in the inductor, it is an passive element just because of an resistance in series with an inductor. स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन द इंडक्टिव सर्किट. सो देखते हैं क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, द एनर्जी स्टोर्ड in the energy stored in the magnetic field at a solenoid 30 centimeter long and 3 centimeter diameter wound with 1000 tons of wire carrying a current of 10 ampere is, and options are 0.015 joules. The next option is 0.15 joules. C option है 0.5 joules, and the last option is 1.15 joules. So देखते हैं क्या इसका ऑप्शन होता है. So energy stored in the magnetic field at a solenoid of 30 centimeter long and 30 centimeter dia wound with a turns of 1000. So अगर इसका डायग्राम पहले बनाया जाए, या पहले हम बात करें, energy stored in the inductor is half Li square. If you see the formula, inductor stores energy in the form of magnetic field, okay, and that energy stored value is half Li square. So I is given to you. I is how much? Yeah, I is given to you, that is 10 ampere. So the first part is solved,
And what is the inductor? And for the inductor we have to take solenoid and whose dimension are given. So I take just one solenoid which is having how many turns? 1000 turns. Okay, so we are having 1000 turns like that. So the number of turns is 1000. Okay, and the current flowing in the solenoid is of 10 ampere. I is 10 ampere. Okay, so when this current is flowing inside this, the energy stored in the solenoid is, okay, so what is this solenoid of length? This is the length of the solenoid is how much? 30 centimeter long. Okay, then we will have the dia. So this is dia. This is your dia of the solenoid. Is how much? It is D is 3 centimeter. Okay, so if you remember the formula of solenoidal inductance, तो अगर देखें inductance का formula था L equals to n square upon S, then L equals to n square upon 1 by mu not mu r into L upon A. Clear है? So it is n square into A upon, it is mu naught mu r into L. So L is this. So number of turns is 1000. Okay, 1000 per square, and area, and you have to take the area in meter. That's why it is in Henry. So just it is calculating area is, it is area is 1.5, I think. So first we have to take radius. So d equals to 2r. So r is d by 2, that is 1.5 centimeter. So pi r square. So area is what? Pi r square. And now it is in air because material is not given. So I just discuss one more thing. The relative permeability, the ratio of the permeability to the material to the free space. So mu equals to mu r a naught. Now if this is the permeability of the material, if material is not given to you, then the relative permeability is taken as 1. Okay, so mu is equals to mu naught, and free space के लिए जो permeability होती है वो 4 pi into 10 की power minus 7 Henry per meter. ठीक है यहाँ तक. So ये वैल्यू हम लगा देंगे. So mu naught mu r तो 1 हो गया, 4 pi into 10 की power minus 7, और L जो है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर. तो 30 into 10 की power minus 2. और अगर हम R देख रहे हैं तो R तो हमने निकाल ही लिया है. 1000 का स्क्वायर इंटू पाई, R कितना है? 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 upon 30 into 10 की power minus 2. If you solve this value, then you will have the L is 2.95, and we will take here L. Just wait, I'm taking L here. L is 2.95 into 10 की power minus 3 Henry. Minus 3 Henry, because inductance unit is this. Okay, now what is the energy stored? So energy stored in the inductor is half Li square. So it is half Li square. Okay, I just take approximately 3 mH millihenry. I'm just taking approximation. Okay, 3 millihenry. ठीक है यहाँ तक. तो half and 3 into 10 की power minus 3 is in Henry, and I is what? I is 10, so 100. Okay, so 100. Okay, so we will have 1.5, that's 1.5 into 10 की power minus 1, because 2 power is eliminating from this, so it is 0.15 joule. So let's take the option. Yes, we have 1.5 joule. So this is the option number B for this question, and please make it important. This question is asked in many times in competitive exam. So याद रखिएगा इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम अपने. क्या हो सकता है?
Now, next to numerical for the purely inductive circuit. So let's see what's the next numerical. So next numerical है हमारा in the circuit shown in figure. In the circuit shown in figure, it is desired to have a constant direct current IT, constant direct current IT through the ideal inductor L. Okay, the nature of the voltage source, VT must be फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, अगला ऑप्शन है लीनियरली इंक्रीजिंग वोल्टेज, देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सी इंपल्स वोल्टेज एंड लास्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग वोल्टेज। ठीक है यहां तक। सो ये रहे हमारे ऑप्शन। डायग्राम देखते हैं क्या होगा। सो ये रहा हमारा डायग्राम। VT, here I am having the pure inductor, this is L and this is of IT। ठीक है यहां तक। So this is your question। So question क्या है एक बार रीड कर लेते हैं। In the circuit shown in figure it is desired to have a constant current। तो हमारी जो डिमांड है ये करंट जो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट करंट होनी चाहिए थ्रू द इंडक्टर। ओके, थोड़ा सा आइडिया लिखता हूं। सो अगर हम क्या वोल्टेज, सो मैं अगर क्वेश्चन को समझूंगी, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मैं किस तरीके का ये वोल्टेज सोर्स लूं जिससे कि जो इंडक्टर है उसमें कांस्टेंट करंट गुजरे। ठीक है, सो देखते हैं पहले क्या होता है। सो फॉर द इंडक्टर इफ यू अप्लाई द KVL देन V minus VL equals to 0, then VL is equals to V, and if you take the magnitude then VL equals to V। ठीक है यहां तक। सो अब इंडक्टर के थ्रू अब आपको पता होना चाहिए इट इज L di by dt। ठीक है यहां तक। इंडक्टर के थ्रू वोल्टेज क्या होता है, इट इज L di by dt। ठीक है, सो इफ यू सी L di by dt is equals to V, that is VT, that is given to you in the question। so it is di by dt is equals to 1 by L VT। now then what is di of t is equals to 1 by L VL of t। now integrate on both side, अगर इंटीग्रेट करें दोनों both side तो क्या होगा, IT is equals to 1 by L VLT dt। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इंडक्टर के थ्रू जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाए, यानी कि जो एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट आ जाए। और ये एक्सप्रेशन कांस्टेंट कैसे आएगा, पहला अगर मैं ऑप्शन उठा लूं तो पहला अगर ऑप्शन वाइज चेक करते हैं, लेट्स टेक ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। अगर मैं कांस्टेंट वोल्टेज उठा लेता हूं तो क्या होगा, देखिए इट इज 1 by L
VL dt, and just constant means it is just V. Okay, so it is V, then it is dt, so it is V by L integration of 1 dt, then it is what? It is T V upon L. So if you see, then it is IT equals to this. ओके अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट जो है वो रैंप आ गया, करंट कैसा आ गया? रैंप। तो अगर मैं बात करूं, इफ वोल्टेज इज कांस्टेंट, if voltage is constant, then current is ramp. आई थिंक ये सब लोगों ने आपने पढ़ रखा होगा कि व्हाट इज स्टेप फंक्शन, रैंप फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन, द सिंगुलरिटी सिग्नल. ओके, so if I draw this, if I draw with the IT versus V graph, then we have IT versus V graph. It is V by L na. Okay, so it is this graph. Okay, so this option is wrong. This option is wrong because in the question he is demanding for the constant current. So option A is wrong if you take the constant voltage. Now check the next option, and that is B option. Let's take option number B. तो अगर हम B को ले ले, इन क्या है? Linearly increasing voltage. So I just take VT is 1, and I think I should take here V is 1 na. So it is V is 1. So V is 1. That is the constant meaning. So if you take constant, then it is 1, 1, 1. So it is T IT versus T graph. Okay. So we are having the ramp current. Okay. With a slope of 1 by L, with a slope of 1 by L. Okay. Now, if you take linearly increasing voltage, and linearly increasing voltage, just it is T. So it is T is greater than 0. Okay. So if you put this value, IT equals to 1 by L T dt, because here V is this. Okay. Then you have 1 by L. The integration of T, that is T square upon 2. Okay, so it is T square upon 2 into L. So it is parabolic. It is what? Parabolic. And this is demanding again what? Constant current. So this is also wrong. So this is also wrong. Now let's take the C option. Let's take the C option. Okay. So देखते हैं क्या होता है C option में. So we will take C option. So what is the IL? IT is equals to 1 by L VT dt, यही तो है ना. सो अगर अब हम कौन सा ले? इम्पल्स से वोल्टेज. ना इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ इम्पल्स, डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 when t is 0 and it is 0 when t is not equals to 0. I think this is a curve related to impulse function. It is impulse. Okay, so when t is 0 it is 1, when it is t is not 0, that let me either this point or this point, so it is not 0. So impulse function graph is this. And one more property related to this, the integration of del t dt is 1. This is the property of the impulse function. So let's apply this property as well as the impulse function. So 1 by L del t dt. So why the property? The area under the curve is 1, so it is 1 by L, and 1 by L is a constant. 1 by L is a constant. So what is the demand of the question? So constant direct current. So if you choose your impulse voltage, then the current through the inductor is constant. So option C is correct. Option C is correct. So it's a very good question. प्लीज इसको देखिएगा दोबारा से कि मैंने क्या बताया है इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. क्या है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं. Now our next question is, inductor stores an inductor
an inductor stores energy in what form? In what form? So पहला ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड and our next option is electromagnetic field. And then we have next option, magnetic field. And last option is your D, in core. So let's see. This is your question number next. So देखते हैं इसका क्या आंसर होता है. So we will have the next question, that is what? So an inductor stores energy in what form? So if you have theory of inductor, then if you see the inductor picture is exactly this. So when your inductor is carrying current, then there is a there is a magnetic field around that. If you see this picture, your current is into the page or your current is out of the page. Okay, so if you have into the page, then according to right hand grip rule, for the right hand grip rule state conductor, if you apply the right hand rule for the state conductor, thumb is in the direction of current and the curled finger is in the direction of magnetic field. So you apply this, so your magnetic field is like that, in clockwise direction. For the out current, if you apply this right hand grip rule, then your magnetic field is like that. Okay, so this is your magnetic field, anti-clockwise direction. This is magnetic field, this is your magnetic field, and this is your current. So when an inductor carries current, it surrounds a magnetic field in the form of concentric circle, and that magnetic field stores energy. So it is half Li square. ठीक है यहाँ तक. So we have what option? First one is electrostatic, wrong. Electromagnetic, it is also wrong. So option C is correct. Inductor stores energy in the form of magnetic field. I think ये मैं लिखवा भी चुका हूं आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना. Our next question is प्योर इंडक्टिव सर्किट. नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा क्वेश्चन, प्योर इंडक्टिव सर्किट. Then we have fill in the blanks, and the first option is consume some power on average. Then next option जो है हमारा do not consume power. Okay, then C option जो है हमारा क्या है देखते हैं. takes power from the line during some interval of cycle, and then returns during of next
part of cycle. Next to part of cycle. Last option है none of these. Last option is none of these. ठीक है. So check करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है इसको. So we have the next question is इंडक्टिव सर्किट में पावर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन होता है. तो अगर आपको याद हो हमने एक डायग्राम बनाया था. Voltage, then we have current diagram like that, and we have also the power diagram also. If you see, remember this diagram, okay? So this is your voltage, this one is current, and the blue one is your power, if you remember. ठीक है. सो फर्स्ट बात करते हैं. अब ये ध्यान रखिएगा आपको ऑप्शन वो चूज करना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो. ये नहीं जस्ट क्लोज टू ट्रू, नेट 100% या जो ज्यादा सबसे ज्यादा सही हो वो ऑप्शन को चूज करना है. क्योंकि कंपटीशन में है जो ऑप्शन है वो इसी तरीके के डिजाइन करे जाते हैं कि आपको लगेगा ये भी सही है ये भी सही है, और आपको क्वेश्चन जो ऑप्शन चूज करना है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट. देखते हैं. कंज्यूम सम एवरेज पावर. तो अगर आपको याद हो एवरेज तो इसका 0 होता था. एवरेज कितना होता था? 0 होता था. सो इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर. सो ये तो गलत हो गया. अगर देखते हैं डू नॉट कंज्यूम पावर, डू नॉट कंज्यूम पावर. अब सी ऑप्शन देखते हैं इसमें पॉसिबिलिटी है. तो अगर अगला ऑप्शन देखें टिक्स पावर फ्रॉम द लाइन ड्यूरिंग सम इंटरवल ऑफ साइकिल देन रिटर्न्स टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ साइकिल. चेक कर लेते हैं. इस इंटरवल में अगर बात करें तो क्या कर रहा है? ये सप्लाई दे रहा है. इस पार्ट में क्या कर रहा है? पावर को कंज्यूम कर रहा है. फिर इस पार्ट में क्या कर रहा है? पावर को सप्लाई दे रहा है और फिर क्या कर रहा है? पावर को कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, ये भी ठीक है. नन ऑफ दिस हटा ही देते हैं. बट ये दोनों ऑप्शन जो है ठीक है याद. बट डू नॉट कंज्यूम पावर. तो यहां पर मेरे को एक बात ये समझ में नहीं, कौन सी पावर भाई? P है या Q है? यहां पर क्लियर नहीं है. और अगर हम बात करें तो एक साइकिल के लिए तो ये पावर कंज्यूम कर रहा है ना. नेक्स्ट साइकिल में क्या कर दे रहा है? रिटर्न कर दे रहा है. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज सी. ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने. Now next question for the inductive circuit is a 10 mH inductor, a 10 mH, that is millihenry inductor carries a sinusoidal current of 1 ampere RMS. ठीक है. at a frequency of 50 hertz. Then the average power dissipated by the inductor is, आपके ऑप्शन है 0 वाट. अगला ऑप्शन है आपका 0.25 वाट. अगले ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन है 0.5 वाट और लास्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है 1 वाट. ठीक है, तो देखते हैं ना. सो ए 10 mH. सो सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस क्वेश्चन का. सो इट इज VT, इट इज IT and it is L. So frequency कितनी दे रखी है? 50. So if you solve this, XL is omega L and L is how much?
10 mH. So omega is 2 pi f into L is 10 into 10 to the power minus 3. Now if you solve this, then it is 100 pi into 10 into 10 to the power minus 3. Then we have pi, there is 314 into 10 into 10 to the power minus 3. Okay, then we will have what? It is just cancel out 2 and divide by 2, then it is 3.14 ohm. Okay, now so this is your inductance in ohm. Now what is the current? The current RMS value is 1 ampere. Now average power. Now if you see the average power, so your inductor does not consume average power because the P average is 0 and Q is equals to VI. Agree? So purely inductor does not consume any active power. It just take return. That means giving the supply to the source, then consume, giving, then take, give, take. So it just follow the relation of give and take. So its answer should be 0 watt. I think ऐसे न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं. अब देखते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर पॉसिबल होते हैं. So we have next numerical on that is and the last question for the inductive circuit is now we'll take the last question for the inductive circuit. So our question is linkage flux per unit current is called fill in the blanks. Then option है हमारे, देखते हैं क्या ऑप्शन है. capacitance, then next we have resistance, and next we have C, inductance, and last one is capacitive reactance. देखते हैं. So if you see the flux linkage flux per unit current is called. Now if you remember the inductance definition, L equals to lambda by I, or in some books it is sine by I, and this lambda is called n phi upon I. So it is called magnetic flux linkage. Magnetic flux linkage. So what they are asking, linkage flux per unit current. So magnetic flux linkage per unit current is called inductor. So for this question we have C option. Now if they ask for the electric flux linkage, then C, electric flux linkage. Okay, now what are the similarities? Inductance is the magnetic flux linkage per ampere. Similarly, the capacitance is electric flux linkage upon voltage. So it is C and it is Q upon B. So C is Q by B and your L is lambda by I. So this is your definition of the inductance and capacitance. If they are for magnetic flux linkage per volt, then it is capacitance. Now linkage flux per unit current is what? Inductance. So for this question the correct option is C. Now so अब तक हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ लिया, प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ लिया. अब इसके बाद हम जो है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ेंगे और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बाद इनके कंपैरिजन करेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे. तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट स्टार्ट करते हैं. देखते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट.